Hello guys, welcome back to my channel, and in this video I'll be talking about everything you need to know about building your portfolio as a freelancer. अगर आप एक नए freelancer हैं जिसको कोई client experience भी नहीं है, तब भी आप अपना portfolio कैसे बना सकते हो, we'll be talking about that. But before we begin, please make sure you subscribe to my channel because I'll be bringing more such videos related to freelancing and content writing. Now, let's move on to this one. So, what is a portfolio and why you need it? If somebody wants to hire you as a freelancer, they would need to see your past experience. They would need to understand what kind of skills you possess, what work you have done in the past to help understand what kind of work you can do for them now, right? So, for that, they would ask you for your portfolio or your work samples. If you send your work samples directly, it would be fine as well, but a portfolio makes the conversion process so much more effective. Suppose करो कि कोई आपसे पूछ रहा है कि कैन यू शोकेस योर पास्ट वर्क और आप 5 लिंक्स भेज देते हो उनको कि दीज आर द आर्टिकल्स आई हैव रिटन. Would that be impactful? Not much. But rather, if you just send them one link or a document that mentions the entire work you have done, not entire, but the best work you have done that is relevant to them, that also showcases what was the impact of that work, that also showcases how satisfied your clients were in the past, and that also has a powerful language and a compelling call to action, that would be much more effective, that would be much more impactful, and you would be able to stand out from the crowd by sharing that portfolio with them. So which is why instead of directly sending your work, unki links या documents, it's best to create one portfolio and share that link with your prospects or your potential clients. Now let us talk about what does a portfolio include. So essentially these 4-5 things. Number one, about yourself. So you need to clearly tell who you are, but don't make it like a long paragraph talking all about your background or your story or how you got started. No, it's not relevant to them. Talk a little about yourself, how long you have been in this industry, what kind of experience you have, who have you worked for in the past, and what kind of skills you possess. Now, after that, you also need to tell what exact services you offer and for whom. That is, who do you help and how. Okay. The next thing that you need to do is to add your work samples, जहां पर आपको क्लियरली अपना बेस्ट वर्क प्रेजेंट करना है. तो अगर राइटर हो तो जो भी बेस्ट आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कंटेंट जो भी आप लिखते हो वो आपको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है. इट कैन बी अराउंड 3 to 5 वर्क सैंपल्स, आइडियली थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है. एंड अगर आप एक नए फ्रीलांसर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सोच रहे होगे कि आस्था मैं काम में डालूं क्या, तो आप अपने पर्सनल नेटवर्क में, आपका कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव्स हो, आप उनको सर्विसेज ऑफर कर सकते हो. इट वुड बी इजियर फॉर यू टू वर्क फॉर देम, राइट. अगर किसी का इंस्टाग्राम पेज है और आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हो, तो आप उन्हें ऑफर करो कि हे, आई हैव स्टार्टेड ऑफरिंग दीज सर्विसेज, सो कैन आई हैंडल योर पेज. एंड आप वहां से रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिल सकता है. तो आप अपने किसी नोन के लिए काम कर सकते हो, और अगर नोन नहीं तो भी आप आसपास किसी भी ग्रुप्स में डाल सकते हो कि आप अपनी सर्विसेज को फ्री में ऑफर कर रहे हो फॉर सम टाइम, या फिर आप बहुत लो रेट्स में ऑफर कर रहे हो, so that you can get some opportunities quickly and it helps you build your portfolio. Now, after adding your work samples, you should ideally also add some testimonials. Now, that testimonial means a recommendation from somebody whom you have worked for in the past. So again, कोई experience नहीं है तो भी आप जिनके लिए काम कर रहे हो फ्री में, your own friends, your family members, your acquaintances, just make sure that you ask them for a testimonial, a short message that tells that you have been of great help to them. So make sure to also add that to your portfolio. Now, आपने अपने बारे में डाल दिया, you've also added your work samples, you've also added your testimonials. The last thing that you need to add is a call to action. That is, what do you want your prospect to do next after checking out your work samples or going through your portfolio? What do they need to do now? That is what you need to state clearly. Ideally, go for a booking link, maybe create an account on calendly.com and then create a link for yourself that you can add to your portfolio, and your clients, your potential clients, can book a call with you. Okay, so that would be an effective way for you to convert them further by interacting with them personally. Okay, now we have talked about things that you need to include in your portfolio. Let's talk about where or how you can create your portfolio.
So number one, you can simply have a Google Drive wherein you add all your work samples that you want to share and then share that drive link. एक चीज important है, access देना मत भूलना, because this is the most annoying thing people do, that they share document or drive links but they don't give access. But again, drive link share करना is not an ideal way to build your portfolio, क्योंकि वहां सिर्फ आप work samples दिखा सकते हैं and that too will not be very organized. अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, मे बी दैट वुड वर्क फॉर यू, क्योंकि आप विजुअल वर्क होगा आपका एंड दैट कैन बी बेटर प्रेजेंटेड इन अ ड्राइव. बट राइटर होकर तो बिल्कुल भी मत यूज करना ये ऑप्शन. यू हैव मेनी मोर बेटर वेज टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. तो स्किप दिस इज लिटरली अ वे यू शुड ऑप्ट फॉर. अगर कुछ करने का मन नहीं है, कोई एफर्ट नहीं डालना पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, कोई टेस्टिमोनियल भी नहीं है, तब यू कैन गो फॉर अ गूगल ड्राइव लिंक. वरना जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करना, पोर्टफोलियो वेबसाइट, एंड नॉट नेसेसरली पैसे स्पेंड करके, डोमेन खरीद के, होस्टिंग खरीद के. नो, दैट्स ओके इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, यू कैन बिल्ड योर ओन पेड वेबसाइट पोर्टफोलियो. बट अगर बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो, यू कैन गो एंड क्रिएट अ फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट. wixsite.com पर आप बिल्ड कर सकते हो अपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां आप उसको अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो. इसके अलावा आप वर्डप्रेस पे भी कर सकते हो. बट अगेन, थोड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है इन चीजों में. तो अगर आपको ये चीजें भी अवॉइड करनी है, आप इतने एफर्ट नहीं डाल सकते, तो यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो ऑन canva.com, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है. कैनवा पर आप एक प्रेजेंटेशन टाइप बना सकते हो 6 से 7 स्लाइड्स की, जहां पर आप अपने बारे में लिख रहे हो, सर्विसेज प्रेजेंट कर रहे हो, पास्ट वर्क की लिंक्स डाल रहे हो, एंड देन अ कॉल टू एक्शन इंक्लूडिंग टेस्टिमोनियल्स. सो ये सब चीजें आप कर सकते हो. लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन है. हमारे कुछ पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ही टूल्स आते हैं स्पेसिफिकली, जैसे फ्यूलर इज वन टूल. सो यू कैन क्रिएट योर अकाउंट ऑन दैट वेबसाइट. वहां पर आप अपना प्रूफ ऑफ वर्क प्रेजेंट कर सकते हो बहुत क्लियरली, बहुत इजीली, और एक कस्टमाइज अलग अलग प्रोफाइल्स बना सकते हो. तो that would be very helpful for anybody who is just looking to get started or want to build a portfolio for free. तो जो भी आपको ऑप्शन बेस्ट लगे अपनी स्किल के हिसाब से और आपके पास क्या क्या चीजें हैं डालने के लिए, उसके हिसाब से पिक अ प्लेटफॉर्म एंड क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ. अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है पोर्टफोलियो कैसा होता है, तो आई विल ऐड सम लिंक्स टू पोर्टफोलियोज इन सब मेथड्स के in the description, so make sure you check that out, and that would give you an idea of how you can build your portfolio even better. Now let's just talk about 3 pro tips that can help you convert more prospects through your portfolio. Number 1, make sure that you add numbers if you have them. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और आप किसी के लिए कोई रिजल्ट्स लेकर आए हो, तो प्लीज उसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालो, चाहे आप नॉर्मली प्रेजेंट करो या आप पूरी केस स्टडीज बनाकर डालो. ये चीज आपके पोर्टफोलियो को बहुत इम्पैक्टफुल बनाता है और आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स ढूंढने में बहुत इजी हो जाता है, क्लाइंट्स कन्वर्ट करने में हाई पेइंग. तो अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, यू कैन ऐड द differences in the number of followers or engagement that you have got or impressions that you have got for a particular client in the past. If you're a blogger, you can add some numbers related to the traffic that you have generated or the engagement you have got on your blogs or impressions on or ranking on search engine. So if you have these numbers relevant to your particular skill and your past work, please make sure to add those numbers. It is going to change the game for you. The number 2 tip that I wanted to give regarding portfolio is try to keep it personalized. For example, you are a writer working in 10 different niches or 3 different niches. You write about travel, you write about beauty, you write about B2B SaaS. Now, these are 3 very different niches. And for example, I am your prospect who wants you to write for B2B SaaS niche. Now, if you send me a portfolio that includes travel and beauty related links as well, and then one link for B2B SaaS, it might not be that effective. I would just consider you a generic writer and not a specialist in anything. Plus, I won't get the exact idea of your work experience in B2B SaaS. So for that, you should prefer sending me a portfolio link that just includes your B2B SaaS samples and relevant work experience and testimonials. So even if not testimonials, just make sure that the work samples that you're sharing are relevant to the niche that your prospect wants your work in. So for example, if you're pitching somebody for social media management, don't send them your
blog samples. It won't help, and it would just make them feel that you are not an expert at social media management. So try to create customized portfolios. Don't like customize every single portfolio. Matlab, don't create every single portfolio from scratch before sending, but keep like one standard template and then change one or two pages that are important to replace them with the best samples and work based on who you are pitching or who you are sending it to, so that it's more relevant to them. And the last one is treat your portfolio like the only opportunity you have to convert a client. So make it the best representation of your work. Do not take it for granted. Don't randomly add any samples. Don't randomly write anything. Don't make those tiny mistakes that can bring a negative impact on your profile or their understanding of you and your services. For example, अगर आप एक writer हो तो अपने portfolio में grammatical mistakes मत करना. Whatever you are writing, make sure that it's grammatically correct, it's factually correct, it's correct in every way. Similarly, अगर आप एक graphic designer हो तो आपकी जो portfolio की presentation होनी चाहिए, it should stand out. It shouldn't be like very basic generic graphics include करके आपने portfolio बना दिया. अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आपकी जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो वेबसाइट पर ही होना चाहिए आपकी, और वेबसाइट बहुत अच्छे से लोड करनी चाहिए. वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट की एनिमेशन, वेबसाइट का प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि योर वर्क स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स. दैट इज व्हाट आई वुड से. जैसे बोलते हैं ना कि इमेज और अ पिक्चर स्पीक्स वे मोर देन द वर्ड्स. सिमिलरली आपका जो काम है वो आपके खुद के काम से भी ज्यादा बोलता है. मतलब है मेरा कि अगर आप वर्क सैंपल्स डाल रहे हो दैट इज वन थिंग, वो तो क्लाइंट देखेगा ही, बट आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो उसमें आपकी स्किल्स कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी वो चीज जेन्युइनली अच्छी है या बस आपने कुछ अच्छे सैंपल लाकर दे दिए बट असल में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो एज अ राइटर, या असल में आपकी खुद की वेबसाइट बहुत बेकार है या फिर लोड नहीं हो रही है एंड यू आर सेइंग दैट यू आर अ प्रो इन वेबसाइट डेवलपमेंट. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो आपके स्किल्स को, आपके काम को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा. So that's it for this video, guys. I hope this video helps you get clarity on how to build your portfolio and you build a really attractive one that helps you convert your clients. अगर क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में जानना है कि हाउ कैन यू फाइंड क्लाइंट्स, देन एक लिंक है जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी क्लाइंट एक्विजिशन से रिलेटेड, तो उसको चेकआउट करना एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड. तो अगर आपको और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को एक्सेलरेट करना है, मंथ के 30 to 50 के अर्न करना है विद इन 3 months, देन मेक श्योर कि आप मेरा कोर्स जो है फ्रीलांस ब्लॉगिंग लॉन्च पैड वो ज्वाइन करो एंड इट वुड बी ग्रेट हेल्प टू यू बिकॉज इट कवर्स एवरीथिंग यू नीड टू नो एज अ फ्रीलांसर. Link to which is in the description, so you can check that out. And guys, please make sure that you give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Share it with anybody who you think can help them with their careers. And I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.